Hello students, good morning. I am audible. Good morning. My voice is clear. Good morning. Good morning, sir. My voice is clear. जी sir. Very good. Thank you. So students, let us start. Today we are going to discuss about antifungal drugs. My screen visible? Yes, sir. Good. Good. Okay. So students, we are discussing about antifungal drugs. So what is the meaning of the antifungal drug? Means drugs which can be used in the treatment of the fungal infection. Drugs which are used in the treatment of fungal infection. जो कि फंगल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट में यूज होती हैं ड्रग्स, उनको हम बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग. Drugs which are used in treatment of fungal infection, they are known as antifungal drug. So the point or question arises over here, what is the fungi? What is fungal infection? So before starting the things, we will we will start about what are the fungi. So students, in animals, or you can say living system or organism organism means living system or living organism which are live, we can divide into the two part. One is prokaryotes, another is eukaryotes. जो भी लिविंग पार्ट है, जो लीव हो सकता है, जिसमें लाइव है, वो उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज द प्रोकैरियोट्स एंड अदर यूकैरियोट्स. सो व्हाट इज द प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? Prokaryotes means the cell of the particular living organism is not well organized, जिनका सेल ऑर्गेनाइज नहीं है. एंड यूकैरियोट्स मीन्स organism, living organism which have well organized cell. Well organized cell means cell which have nucleus. Yes sir, वो सेल जिसमें न्यूक्लियस Other, प्रेजेंस हो. yes, and other other organelles, microorganelles also, like mitochondria, Golgi body and all, that should be present. So the eukaryotes may be the unicellular and multicellular, means maybe made up by the unicellular and multicellular. So unicellular eukaryotes, that would be called as the protista. And again, the multicellular, the protista, basically unicellular eukaryotes. Say for example, protozoa, molds, algae, they are protista. They are unicellular eukaryotes because they have the well organized cell. And you can say prokaryotes, they are they does not have the well organized nucleus, or you can say well organized cell. Example is bacteria. So again, you can say multicellular. You can say eukaryotes we can divide into the two part, the unicellular and multicellular. So the multicellular eukaryotes, again we can divide into two part. That eukaryotes which have the cell wall, and eukaryotes which does not have the cell wall. Cell wall containing eukaryotes, we know that called as plantae or plant. And without cell wall, animals. So we are animals, we don't have cell wall. So the with cell wall, plantae or plant, again we can divide in two part. The plant which can be
you can say photosynthesis, which can able to photosynthesize, another which cannot able to photosynthesize. Able to photosynthesize, to perform photosynthesis, that is plants. Green plants mixed with that contain the chlorophyll, plants. And do not perform photosynthesis, that is fungi. Lack of chlorophyll, leaves, true stems, basically they are parasites. So look at here in the old diagrammatic way, you can say what is the fungi. Fungi is a non photosynthetic cell wall containing eukaryotes. Students, I think it is clear. So fungi is parasitic non photosynthetic cell wall containing eukaryotes. I think you got the point about the fungi. फंजाई क्या होती है? फंजाई वो है जो कि पैरासाइट्स होते हैं, सेल वॉल इसके अंदर होती है और यूकेरियोट्स होते हैं. ओके, क्लियर फ्रॉम दिस पार्ट? एनी स्टूडेंट्स कैन मी टेल मी? बता सकता है कोई? Yes, sir. वेरी गुड. अनदर नेक्स्ट स्लाइड हियर, द माइकोलॉजी. Mycology, study of the fungi. Study of the fungi is come under mycology. Fungi is the singular and fungus is the plural. So fungi is a singular, what you can say. So main characteristics of fungi. What are the main characteristics I have discussed with you? They are eukaryotes, means well organized cell. They contain nucleus, mitochondria, other part of the cell. They are heterotrophs. Heterotrophs means for food material they are dependent on other organism, means they are basically they are present, they live in the form of parasites. So they are parasites, that's why they are called as heterotrophs. Another, they are multicellular. I have told you they are eukaryotes, multicellular eukaryotes. They cannot move on their own because they are parasites. So these are the characteristics part of the fungi. Eukaryotes, heterotrophs, multicellular, cannot move their own here and there. So these are about the fungi. Students, we know we are discussing about antifungal drugs, means drugs which are used in the treatment of infection of due to the fungi or fungal infection. So fungal infections that may be basically takes place on the skin or cavities, body cavities. So before discussing the you can say chemistry of antifungal drug, we have to start with little bit about skin. So this is the diagrammatic way of about skin. We know skin have two layer. One is epidermal layer, another is the dermal layer. Dermal layer contains all, you can say, blood capillaries as well as muscles in the dermis part, and epidermis part that contain hair and sensory nerve, they are in dermis part, epidermis part, sorry. So this is the structure of the skin that you might be going through in anatomy physiology previously in school level and in diploma also. So another is types of mycos, major types of mycos, means fungal infections. Where the fungal infections, how many, where is the fungal infection may takes place? कहाँ कहाँ fungal infection हो सकता है? One is the superficial, cutaneous, subcutaneous, systemic and opportunistic. इनका मीनिंग क्या है? सुपरफिशियल मतलब सरफेस के ऊपर, क्यूटेनियस मतलब क्यूटीन मीन्स अंडर द क्यूटीन, द क्यूटेनियस. सबक्यूटेनियस मीन्स एपिडर्मल पार्ट, सब पार्ट सबक्यूटेनियस. एंड सिस्टमिक मीन्स blood vessels, inside dermal part or blood vessels. Opportunistic means fungi, they are so much opportunistic. If they are getting the favorable time, favorable conditions, they can grow anywhere. Okay, so next
Students, this is clear? Let me know anyone. यहाँ तक समझ में आया? Yes, sir. Very good. Very good. So we had discussed about the fungi, about the skin, and fungal infections. How many types of fungal infections? Superficial, cutaneous, subcutaneous, systemic, opportunistics. Now the pathogenic fungi. How many types of fungi? Basically, there are the number of the fungi are there. They are pathogenic. Pathogenic means they can produce disease in the human beings. Okay. So students, I am putting a, you can say, link to you for your attendance. You can refer it, please. Next part, the pathogenic fungi like Candida, Aspergillus, Cryptococcus, Histoplasma, Pneumocystis, uh, Stebrophytes, Microsperm, Tacophytons. So these are the different fungal species that can be responsible for pathogenic conditions. हमारे बॉडी में डिजीज के जो कारण हैं वो ये डिफरेंट टाइप की जो पैथोजेनिक जो आपके फंजाई हैं उनके थ्रू डिजीज हो सकती है. One by one we let us see among them the Candida and Aspergillus is much dangerous and much common. ये सबसे ज़्यादा कॉमन इन्फेक्शन है. This is again on the slides. You look at here. The Candida, which can infect in individuals and deficient immunity systems. Basically, they inhibit, they decrease the immunity of any persons. So Candida decrease the immunity of the persons. It is important that Candida species, when infect, then it decrease immunity systems, immune power of the body. Like yeast infections due to the yeast, candidemia means infections of Candida, candidemia, candidiasis, again, this is the candidiasis, UTI infections, peritonitis, peritonitis means swelling in, can say, in intestine, the peritonitis, again, it's an infection due to the fungi. So these are Candida infections, students. About infection due to the Aspergillus, especially Aspergillus fumigatus and Aspergillus flavus. And the Aspergillus flavus produce alpha toxin, and which is toxic as well as the carcinogenic. Carcinogenic means कैंसर प्रोड्यूसिंग, जिसके कारण कैंसर हो सके. तो जो है अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस फ्लेविलस, वो कैंसर भी कॉज कर सकता है. एंड बेसिकली इट इज contaminated due to the food, due to in contaminated food like nuts and all. Means root of infection is food, contaminated food. Aspergillus fumigatus and Aspergillus clavitus, basically it causes allergic disease in many patients, allergic disease. And some Aspergillus species causes disease on grains, crops. Means you know, जो हमारी फसल के ऊपर भी जो ग्रोथ हो जाती है, मेज के ऊपर है, ऐसे माइकोटॉक्सिन्स जो है अल्फा टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं. मेज बहुत सी ससेप्टिबल होती है. मेज के में आप देखते होंगे मेज बहुत जल्दी खराब हो जाती है ड्यू टू द एस्परजिलस इन्फेक्शंस. सो these Aspergillus species is responsible for, I can say, pathogenic as well in the human beings, animals, as well as the plants, in both. Aspergillosis is special types of disease, the group of disease that is caused by the Aspergillus species. And in Aspergillosis, what happen? The fever, cough, chest pain, and breathlessness. There are the symptoms that can be happen. Basically, in Aspergillosis, what happen? Immune system become weak. I have told you that, and lungs become susceptible. Okay, immunity will decrease in Aspergillosis.
So aspergillus is infection due to the aspergillus. It's cause a decrease in immunity in the patients, in human beings. Students, these are some pictures of in which aspergillus fumigatus infections takes place, aspergillus flavus infection that is takes place. Students, tell me, we had discussed about previously we had discussed about fungi, skin, fungal infections, and species that is responsible for the pathogenic fungal infection basically, that we has in details we had discussed, and pathogenic conditions in human beings that we had discussed. तो यहाँ तक आपको समझ में आया नहीं? Let me know. Yes, It is clear? किसी को डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ सकता है. Anyone have any doubt? Please ask me. Because good interaction with you and me is very good learning process. पूछ सकते हैं आप लोग, कोई भी डाउट हो. अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि फंजाई क्या है, कि हमने देखा कि फंजाई क्या है. फंजाई एक पैथोजेनिक, नॉन फोटोजेनिक, फोटोसिंथेसिस सिंथेटिक यूकेरियोट्स हैं जो कि पैरासाइटिक फॉर्म में रहते हैं. कहाँ? ह्यूमन में और प्लांट्स में. हमने देखे ह्यूमंस में स्पेशली कैंडिडा, कैंडिडा स्पीसीज और एस्परजिलस स्पीसीज जो है स्पेशली डिजीज कोज करती है. बाकी और भी हमने बहुत सारी स्पीसीज देखी, और इसमें हमने देखे कैसे स्किन इन्फेक्शन हो सकते हैं, क्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, सिस्टमिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, और रसेस हो सकते हैं. एस्परजिलस जैसी जो फंजाई है वो हमारी इम्यूनिटी को डिक्रीज कर सकती है, इम्यून सिस्टम डाउन हो सकता है. ओके, एंड जिससे कि सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होंगे, सिस्टमिक जो है हमें प्रॉब्लम्स होगी, लाइक ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम होगी, फीवर होगा. ओके, जो हम देख चुके हैं सिम्टम्स, एस्परजिलोसिस जिसको बोलते हैं. तो दीज आर द डिजीज एंड दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फंगल इन्फेक्शंस. नाउ we are discussing about antifungal drug. Now we are starting. So let me know. It's okay. I think we are starting again. So the antifungal drug, we can classify it on their chemical structures. Based on the chemical structures, we can classify it into the various classes. First, polyenes. Polyenes का मतलब है, पोली मतलब बहुत सारे, ईन्स मतलब डबल बॉन्ड. ऐसे जो स्ट्रक्चर जिसमें बहुत सारे डबल बॉन्ड्स हों उनको बोलते हैं पोलीन्स. सो इन द कैटेगरी ऑफ द पोलीन्स देयर आर द टू टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स. देयर इज नाइस्टेटिन एंड एम्फोटेरिसिन बी. स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड विथ यू that about antibiotics. What is the antibiotics? Antibiotics are any substance which can be synthesized from microorganism, can be used to inhibit the growth of microorganism in minimum concentrations. तो नाइस्टेटिन और एम्फोटेरिसिन भी है, दोनों ही जो है माइक्रोब्स से मिलती हैं, और फंजाई भी एक माइक्रोब्स है, उसके इनहिबिशन में यूज होती हैं मिनिमम कंसंट्रेशन में. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज antibiotics. So nystatin and amphotericin B, they are polyene antibiotics. Another class is imidazoles. Imidazole nucleus means heterocyclic nucleus containing antifungal agents like miconazole, clotrimazole, and ketoconazoles. Ketoconazole, miconazole, and clotrimazole, they are imidazole class of antifungal drug. They contain imidazole heterocyclic nucleus in their structure. Because the structure of these antifungal drug is not in your syllabus, we are not going in detail about the structure. So triazoles. Triazole, again 3 nitrogen into the 5-member ring, that is called as triazole. Fluconazole, itraconazole, voriconazole, and phosphoconazole. So students, you remember fluconazole, itraconazole in triazole category of the antifungal drug. Another class is allylamines. Allylamine group is there. So naptipine, terbinafine, and tolnaftate. Tolnaftate, terbinafine, and naptipine, they are allylamine class of antifungal drug. Another is beta-3 glucan synthetase inhibitors. Students, glucan synthesis is an enzyme which is specially responsible for synthesis of the compound or substance which can produce the energy to fungi. So basically these types of inhibitors, they decrease
the can say fungal nutritions, they decrease availability of the fungal nutritions. फंगाई को अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेगा तो वो ग्रो नहीं करेगी, तो इसका फंक्शन है बीटा बीटा 3 ग्लूकेन सिंथेटेज इनिबिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं फंजाई को न्यूट्रिशंस अवेलेबल कराने से प्रिवेंट करती है, उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. एग्जांपल्स कैप्सो फंजाई, म्यूको फंजाई एंड एनिड्यूल फंजाई. सो दीज आर beta 3 glucan synthetase inhibitors, and some others like glycopulvine, flucytosine, and tolnaftate again. So these are some other special types of antifungal drug. These are used for systemic use, basically systemic infections like infection in cavity and all. So students, let me know it is clear to you. अभी तक समझ में आया आपको जो मैंने लिटिल बिट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. डिफरेंट क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर बेस्ड क्लासिफिकेशंस मैंने देखा है, आपको बताया है. आर यू एबल टू अंडरस्टेबल? जी सर. Students, you are now your strength is decreasing. Why? I don't know. Because I need your attendance. Don't give no, don't leave me. After the class, I will take your snapshot for attendance. So that is the important for me. क्योंकि आप लोग अटेंडेंस तो फिल कर देंगे, लेकिन अटेंडेंस के साथ स्क्रीनशॉट भी मुझे चाहिएगा. Okay, let us discuss again. We can classify fungal drug into the on the basis of pharmacological action or pharmacological use. One is systemic antifungal and superficial, or you can say topical antifungal agents. So we can classify in two categories: systemic fungal infections like drugs like polyene antibiotics, amphotericin B, pyrimidine antabolites like flucytosine, antifungal azoles like ketoconazole, fluconazole, itraconazole, and echinocandides like uh, capsofungi, mucofungi, and all. And drugs for superficial fungal infections, systemic drugs like glucopulvine, iodine, topical drugs like nystatin, haloprogen, and tolnaftate. And azoles category of the antifungal drug, muconazole, econazole, and clotrimazoles. Students, this slide is important for you because there is a can say antifungal drug which use systemically as well as topically with their brand name. So we have to remember only few important fungal drugs like amphotericin B. Amphotericin B, it is brand name is Ambisome. Ambisome is the brand name for amphotericin B. Similarly, fluconazole, diflucan by name of the fluconazole. Itraconazole is sporanox, as well as ketoconazole, nizoral, and another you can say like topically used dosage form, nystatin is very common. Nystatin, mucostatin. By the name of the mucostatin, nystatin is very important antibiotic, fungal antibiotic. That is polyene types of antibiotic, nystatin, mucostatin. Okay, so the few of them you have to remember: nystatin, fluconazole, ketoconazole, similarly itraconazole, and amphotericin B. At least these types of as well as the glycopulvine. There is gripulvine. Glycopulvine is gripulvine V. These are the important one. So students, the classification part is over. So let me know you are adjustable or not. आपको समझ में आया या नहीं? हम आगे बढ़ें. If it is okay. Anyone? सर एक बार इम्पोर्टेंट ड्रग से एक बार रिपीट कर देते. हाँ बिल्कुल कर देता हूँ. देखिए
एंटी फंगल ड्रग, क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी फंगल ड्रग हमने क्लासिफाइड किया। दो तरीके से क्लासिफिकेशन इसका हो सकता है। पहला जो आपका स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, हाँ, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जैसे कि हमने देखा, देखिए बैक साइड में चलते हैं पूरा, आप फिर से देख सकते हैं। जो पोलीन एंटीबायोटिक्स हैं, जिसमें पोलीन मीन्स बहुत सारे डबल बॉन्ड कंटेनिंग जो स्ट्रक्चर होती है, पोलीन एंटीबायोटिक्स, नाइस्टीन, एम्फोटेरिसिन भी इंपॉर्टेंट है। इमिडाजोल कैटेगरी की जो एंटीबायोटिक एंटीफंगल ड्रग है, जिसमें कीटोकोनाजोल, म्यूकोनाजोल, क्लोट्रिमाजोल इंपॉर्टेंट है। ट्रायाजोल कैटेगरी की जो ड्रग है उसमें फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये दो इंपॉर्टेंट है। बाकी आप जो अदर्स में हैं उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तीन कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर्स में आप जो एलाइलेमिन्स हैं उसमें टोल्डेप्टेट इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही आपका अदर्स में ग्लूसिपुलवाइन इंपॉर्टेंट है एंड फ्लूसाइटोसिन समवॉट। सो ये हमने स्ट्रक्चर बेसिस क्लासिफिकेशन देखा, जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप इसको सिर्फ इतना ही समझ लें कि ये इस तरीके से होती है। बट इंपॉर्टेंट आपका है ये, दैट इज द सिस्टमिक एंटीफंगल इन्फेक्शन। सिस्टमिकली जब ट्रीटमेंट होता है उसमें कौन सी यूज कर सकते हैं और टॉपिकली कौन सी यूज होती हैं। एम्पोटेरेसिन भी, फ्लूसाइटोसिन एंड फ्लूकोनाजोल, इटाकोनाजोल, दे आर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शंस। और ऐसे ही आपके सुपरफिशियल इन्फेक्शन अगर होगा तो उसमें क्या होगा, ग्लिसोपुलवाइन जो सिस्टमिकली ड्रग्स हैं यूज होती हैं, एज वेल टॉपिकली नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन हमेशा टॉपिकली यूज होती है स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा। नाइस्टेटिन इज ए पोलिन एंटीबायोटिक्स एंड इज यूज टॉपिकली। नाइस्टेटिन, टोलनेप्टेट इज टॉपिकली यूज। मिकोनाजोल, इकोनाजोल एंड क्लोट्रिमाजोल, दे आर यूज टॉपिकली, सो दे आर इंपॉर्टेंट वन। ये जो है आपकी ब्रांड नेम है एम्पोटेरेसिन बी, जिसका ब्रांड नेम है एम्बिसोम। एम्बिसोम इज एम्पोटेरेसिन बी, इट इज यूज सिस्टमिकली। दूसरी जो है फ्लूकोनाजोल डाइफ्लूकान, फ्लूकोनाजोल डाइफ्लूकान, एज वेल एज इट्रोकोनाजोल स्पोरोनेक्स, स्पोरोनॉक्स, एज कीटोकोनाजोल निजोरल। निजोरल इज द ब्रांड नेम कीटोकोनाजोल। ऐसे ही आप टॉपिकली में दे सकते हैं नाइस्टेटिन, मिकोस्टेटिन इसका ब्रांड नेम है। नाइस्टेटिन इज द मिकोस्टेटिन द ब्रांड नेम फॉर नाइस्टेटिन। ओके, so these are important one that you have. Clotrimazole, again is clotrimazole is important. The lotrimine, lotrimine is the clotrimazole brand name, you can say brand name for the clotrimazoles. So these are few one that we are putting here, the number of the list here. So you have to remember few important one जो मैंने बताई, ये कुछ important है जिनको आपको लर्न रखना होगा। तो बताइए अभी आपको क्लियर है? जी सर। Okay, very good. Now another part, mechanism actions of the drug. कैसे ये mechanism action इनका होता है? What is the mechanism action of the drug? Students, the fungi, the cell is there in picture. Yellow color is the cell, and it contain well organized nucleus and other cell organelles because they are eukaryotes. ये eukaryotes होते हैं. Okay, so you know cell, and they contain cell wall because they are planty-like animals. Planty-like organism, planty-like. So they does not have the can say chlorophyll, do not perform photosynthesis. So the antifungal drugs that are basically act on the fungi. So look at here, the cell membrane and cell wall of the fungi. कैसे कैसे बनी होती है cell membrane और cell wall fungi की? First thing, the cell wall is made up with the protein that is beta glucans. बीटा ग्लूकेन प्रोटीन से बना होता है। मैंने कहा था अभी आपका बीटा ग्लूकेन सिंथेटेज इनहिबिटर्स, वो बीटा ग्लूकेन सिंथेटेज इनहिबिटर्स बीटा ग्लूकेन को अवेलेबिलिटी को कम करता है, जिसकी सिंथेसिस कम करता है। सो व्हाट हैपन, इनडायरेक्टली सेल वॉल विल नॉट बी सिंथेसाइज्ड। काइटिन इज द अनदर प्रोटीन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर, द बीटा ग्लूकेन एंड काइटिन, दे आर joined here and form the protein layer. Similarly, cell wall is fused with the cell membrane. Cell membrane is the bilayer, and one is the lipidal part, another is the you can say protein part. Lipid, basically the ergosterol is the lipids, and ergosterol is synthesized from cholesterol through the squalene as well as cholesterol. So few drugs like azoles, ketoconazole, miconazole, itaconazole, they are as well as the terbinafine. They inhibit
द सिंथेसिस ऑफ इर्गोस्ट्रॉल, इर्गोस्ट्रॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं एजोल्स और ट्रेबिनेफाइंस, जो इंपॉर्टेंट है। नाइस्टेटिन इम्पोर्टेरेशन भी, ये क्या करती हैं, वो सेल वॉल सॉरी सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं और सेल मेम्ब्रेन में पोर करती हैं, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन में सारा सेल कंटेंट, फंगल सेल कंटेंट बाहर आ जाएगा। सो देयर इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एम्पोटेरेशन बी। सिमिलरली अल्फा बीटा ग्लूकेन सिंथेटेज, जो इकोनोकैंडीन्स जो थी, वो क्या करती हैं, सेल मेम्ब्रेन में इंटरफेयर करती हैं। सो लुक एट दिस द लिटिल विन, दिस इज अगेन द सेम थिंग यू आर पुटिंग इन दिस स्लाइड। जो लिटिल हमने बताया कि एजोल्स को आपको यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एजोल्स। एजोल्स क्या करती हैं, एर्गोस्टेरोल की अवेलेबिलिटी को कम करती है। एजोल्स लाइक कीटाकोनाजोल्स, मिकोनाजोल्स, इट्राकोनाजोल्स, दे आर decreasing the availability of ergosterol. Ergosterol is the lipidal part that is important for the synthesis of the cell membrane, okay, of the fungal cell membrane basically. Okay, so these are important class of drugs and their mechanism actions you have to be remember, students. Okay, so this is again one slides in slide you can say commonly you can remember what amphotericin B, nystatin, both interrupt in cell membrane formations, fungal cell membrane formations. ये फंगल सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती हैं, विच वन, एम्पोटेरेशन बी एंड नाइस्टेटिन. Similarly, capsofungine is responsible for cell wall synthesis, is inhibition in cell wall synthesis. They interrupt in cell wall synthesis. And similarly, itraconazole, fluconazole, ketoconazole, or azoles, they are responsible for inhibitions of ergosterol synthesis, because ergosterol is the important component of cell membrane as well as the cell wall. So they inhibit ergosterol synthesis. Similarly, naptifine as terbinafine, they inhibit the synthesis of lenestrol. Lenestrol is an important component which is responsible for synthesis of ergosterol, and ergosterol again used in synthesis of cell membrane. And another last one, there is flucytosine, that is the inhibition responsible for inhibition of fungal nucleic acid synthesis. So students, मुझे बताएं आपको ये जो आपका एक डायग्रामेटिक वे में मैंने आपको सारी शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट एंटीफंगल ड्रग है उनका मैकेनिज्म में दिखा है। एम्पोटेरेसिन बी और नाइस्टेटिन सेल मेम्ब्रेन को इंटरप्ट करती हैं, सेल मेम्ब्रेन को रप्ट करती हैं, फंगल सेल मेम्ब्रेन को इंटरप्ट करती हैं। कैप्सोफुलवाइन सेल वॉल सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। सारी एजोल्स, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, सभी एजोल्स जो हैं वो इर्गोस्टोल का सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। और नेप्टिफाइन ये लेनेस्टोल को सिंथेसिस कर इनहिबिट करती है। सो ये इंपॉर्टेंट एंटीफंगल ड्रग हैं जिसको मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे। प्लीज लेट मी नो कि आप लोगों को समझ में आया या कोई डाउट हो, प्लीज आस्क मी। Students, reply me. You have any problem? Anything you want to ask? No, sir. Okay, thank you. Students, I don't understand why they are left. I think network में issue भी हो सकता है। Students increasing from 13 अब 13 तक आते हैं, उसके बाद वापस 10 तक हो जाते हैं। Please increase your number, and maybe due to the network issue and other things also. Anyway, next we are discussing pharmacology part of the amphotericin B. Amphotericin B is a important class of important antifungal drug that we had discussed previously. That is, it's a polyene antibiotics, and basically it is used for systemic infections. Mode of action we had discussed about, it inhibit the ergosterol biosynthesis, and ergosterol that is important for formation of cell membrane of the fungal cell. Okay, they make a pore in cell membrane. That's why what happen, cell contents will leak out. क्या करता है ये सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देता है, पोर कर देता है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन बाहर आ जाता है। इर्गोस्टेरोल जो कि सेल मेम्ब्रेन के सिंथेसिस के लिए जो जरूरी है बैक्टीरियल फंगल सेल मेम्ब्रेन के लिए, तो फंगल सेल मेम्ब्रेन के इर्गोस्टेरोल का सिंथेसिस जरूरी है, वो इर्गोस्टेरोल ये सिंथेसिस नहीं होने देता
inhibit the synthesis of ergosterol. So that is the things, and that's why amphotericin B is known as the antifungal as well as the fungal infection or fungal or statical drug. Students, this is the, you can say, antifungal spectrum, means activity and resistance. You know, the amphotericin B have the large, you can say, very good antifungal activity. It is used in treatment of aspergillus, in treatment of blastomyces, cryptococcus, candidias, all types of fungus, you can say. So mainly it's a broad spectrum antifungal antibiotics, broad spectrum antifungal antibiotics. And resistance is very rare, means किसी भी फंजाई में resistance develop नहीं होता, is very less, very rare. Another things, there is pharmacokinetics. Basically, it's a very good, it has very good biotransformation. Half life is 14 days, is so much high. Okay, so it is given systemically because oral bioavailability is very less, so it have to be given systemically injectable forms. Okay, formulations, many types of formulations it may be available, like a complex with the deoxycholate, liposomal complex, IV or administration only, intrathecal administration, some were topical, but oral infection is not given because only the in oral cavity, infection in oral cavity for gargles and all, it can be used. But can say our enzymes, digestive enzymes can destroy it, so we cannot take as tablet and orally. So the adverse effect, students, of ketoconazole, amphotericin B having a nephrotoxicity as well as thrombophlebitis. नेफ्रोटॉक्सिसिटी का मतलब क्या होता है? नेफ्रोटॉक्सिसिटी मींस नेफ्रॉन्स में जो है हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, नेफ्रॉन्स में टॉक्सिसिटी होगी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी. ओके, एंड ऐसे ही आपको थ्रम्बोफेलेबाइटिस. थ्रम्बोफेलेबाइटिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स जो इंजेक्शन होने पे अपनी स्वेलिंग हो जाती है अपनी स्किन के अंडर में, आपने देखा होगा बहुत से स्वेलिंग सी हो जाता है, रेडनेस हो जाता है, दैट इज द थ्रम्बोफेलेबाइटिस. बहुत से पेशेंट्स में ऐसा होता है, इंजेक्शन लेने के बाद उनको सोजन सी आ जाती है जहाँ पे इंजेक्शन लगता है. एंड कुछ साइड इफेक्ट आपका सीएनएस रिलेटेड भी हैं, डिलीरियम और सीजर्स जैसे झटके आना, मिर्गी आना, इस तरीके से. एंड डिलीरियम मीन्स उसको, डिलीरियम वही उसी का एक तरीके से उसको थोड़ा सा शोक जैसा लगेगा, उसको लगेगा कि मतलब सीएनएस इफेक्ट उसको प्रोड्यूस होगा. वेट लॉस भी होता है. ओके, सो दीज आर साइड इफेक्ट्स. हेडेक, नोसिया, वोमिटिंग, दे आर द कॉमन वन. Okay, so students, amphotericin B is the drug of choice for number of the fungal treatment, fungal, you can say antifungal, you can say fungal infection, treatment in fungal infections like aspergillosis, in treatment of candidiasis. Okay, so the important one. And also amphotericin B can be used other as a drug of choice. Means drug of choice का मतलब है जिस ड्रग इस एकमात्र जो चॉइस है कि उस ट्रीटमेंट के लिए, लाइक एस्परजिलोसिस के लिए एम्फोटेरिसिन भी यूज ही होना है, कैंडिडियासिस के लिए वो ड्रग ऑफ चॉइस है, वो फर्स्ट प्रिस्क्राइब ड्रग होगी. और अल्टरनेट ड्रग मीन्स किसी के साथ एक ऐसे को एडमिनिस्ट्रेट की जाएगी, जैसे कि अगर ब्लास्टोमाइसिस का इन्फेक्शन है या स्पोरोकिटोसिस का इन्फेक्शन है, तो ये क्या करेंगे, एम्फोटेरिसिन बी जो है वो किसी दूसरी एंटी फंगल ड्रग के साथ ट्रीट दी जाएगी, को एडमिनिस्टर्ड. So students, chemistry about the ketoconazole you understood, it is clear. About amphotericin B, amphotericin B का chemistry आपको समझ में आया, कैसे यूज होती है फार्माकोलॉजी? Anyone? Let me know. सर एक बार दोबारा बताऊं, ठीक है? देखिए हमने डिस्कस किया एम्फोटेरिसिन बी. एम्फोटेरिसिन पोलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है, बहुत सारे डबल बॉन्ड्स में होते हैं. मैकेनिज्म में देखा कि इर्गोस्टेरॉल का सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, सेल जो फंगल सेल मेम्ब्रेन है उसमें पोर कर देती है, छेद कर देती है, जिससे कि सेल मेम्ब्रेन जो है रप्चर हो जाती है, खत्म हो जाती है और उसमें सेल कंटेंट बाहर आ जाता है. इसके स्पेक्ट्रम एक्टिविटी, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल ड्रग है. बहुत सारे जो फंगल इन्फेक्शंस हैं अलग अलग टाइप की जो हमने
8 स्पीसीज देखी थी, उन सब में ये यूज होता है। रेजिस्टेंस इसका है नहीं, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब है कि फंजाई में ऐसा म्यूटेशन का ऐसा चेंजेस होते हैं जिससे कि वो उसका जो जो एम्फोटेरिसिन बी है उसकी इफेक्ट, उसकी एक्टिविटी अपने आप कम हो जाती है, वो एक्शन नहीं कर पाती है। इसका फार्माकाइनेटिक हमने बताया कि ये ओरली इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि एंजाइम इसको हमारी बॉडी के एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसको हम टॉपिकल ले सकते हैं और आईवी इंजेक्टेबल फॉर्म्स में इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसके फॉर्मुलेशंस जो हैं लिपोसोमल फॉर्मुलेशंस भी हैं, आईवी इन्फेक्शन फॉर्मुलेशंस भी हैं। ठीक है, साइड इफेक्ट्स हमने बताया इसको, न्यूरोटॉक्सिसिटी, सॉरी नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब किडनी में टॉक्सिसिटी, नेफ्रॉन हमारा वर्क नहीं करेगा, नेफ्रोटॉक्सिसिटी होगा। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस, इंजेक्शन के टाइम पे फ्यूजन्स होंगी जहां पे इंजेक्शन होगा। कॉमन है इसके हेडेक होगा, नोशिया, वोमिटिंग। नोशिया मतलब होगा कि उल्टी नहीं आती, उल्टी जैसा मन करता है, नोशिया। वोमिटिंग मतलब उल्टी होना, हेडेक मतलब सर दर्द होना। तो ये इसके जो है साइड इफेक्ट्स हैं। वेट लॉस, सॉरी वेट भी कम हो जाएगा। सो दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ एम्फोटेरिसिन बी कॉमनली। एंड एम्फोटेरिसिन बी ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस मतलब जो अल्टरनेट ड्रग नहीं है, एक ही ड्रग है जिसको पहले प्रिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि एस्परजिलोसिस का इन्फेक्शन हुआ, कैंडिडियासिस का इन्फेक्शन हुआ, तो हम क्या कर देंगे, सबसे पहले एम्फोटेरिसिन बी दी जाएगी जिससे उसका ट्रीटमेंट हो सके। एंड अल्टरनेट ड्रग जो कि एम्फोटेरिसिन बी किसी और ड्रग के साथ भी ट्रीटमेंट में ले सकते हैं, जैसे कि ब्लास्टोमाइसिस है, ब्लास्टोमिकोसिस, देन कैन बी यूज एज ए अल्टरनेट ड्रग। Students, mute from your side, please. There is no disturbance from your side. Please, noise disturbance. Unmute from your side. Gaurav Singh, please unmute your mic. Okay. Next. तो स्टूडेंट्स यहाँ तक समझ में आया अभी? Let me know about Yes, the sir. amphotericin B. Okay. Next about the chemistry of azoles. Azoles मतलब कीटोकोनाजोल्स, इट्राकोनाजोल्स, फ्लूकोनाजोल्स, म्यूकोनाजोल्स। ये सभी जो एजोल्स हैं वो क्या करती हैं? बेसिकली मोड ऑफ एक्शन इसका, व्हाट इज द मोड ऑफ एक्शन? दे इनहिबिट स्टेरॉल, और कैसे? अगेन इनहिबिट डिस्टर्बेंस। गौरव सिंह प्लीज म्यूट योर माइक। Okay. So next, so imidazoles, you can say like azoles, ketoconazoles, itraconazoles, fluconazoles. So mode of action. What is the mode of action? They inhibit the, can say ergosterol synthesis, ergosterol biosynthesis. Ergosterol synthesis. Ergosterol ka, what is the role of ergosterol? Ergosterol is basically used in the synthesis of fungal cell membrane that we had discussed previously. And is the all azoles, they are used in treatment of various types of fungal infections like aspergillus, like candidiasis, like sporostrids, like microsporiums, dermatophytes. Dermatophytes means dermal infections, हमारे स्किन के ऊपर dermal infection है, there is dermatophytes, उसमें भी यूज होती है। ओके, एंड साइड इफेक्ट स्टूडेंट्स, there is very noise. Is Gaurav Singh, again you are making the things. I will remove Gaurav Singh, please. Gaurav Singh, please don't unmute. Noise from your side. I will remove you. Okay. So now, so side effects, I can say azoles, they have various types of side effects, basically CNS types of side effects as well, endogenic side effects. So that is, we are not going in detail. That is all for you. And pharmacokinetic, I have told you that is, it is used parentally. Adverse effects are gynecomastia, and gynecomastia मतलब जिसमें स्टेरॉइडल साइड इफेक्ट्स हैं वो हेपेटाइटिस, हाइपोकेलेमिया। हाइपोकेलेमिया मतलब कैल्शियम, पोटेशियम की कमी हो जाना, हाइपरटेंशन कोज करेंगी।
Okay. Next slide, there is drugs and that is used topically. There is nystatin. Student, nystatin is in fact used basically for local candidic infection, Candida infection or candidiasis. It can be administered orally, vaginally, and cutaneously. Tolnaftate again is used in dermatophytis. Dermal infection है candida, but not against the candida, other infections जो आपका टोलनेप्टिन यूज होगी. एंटी फंगल एजेंट्स हैं, एजोल्स हैं, वो कि आपके किस में होंगी, दैट मे बी यूज्ड इन द क्यूटेनियसली, that may be used in the dermal infections, dermatophytic infections. So these are topical infections. Students, this slide, look at here, it has adverse effect like nystatin is very important. Gaurav Singh, you are making so much disturbance. Why I can't understand. So look at here this slide. Students, अब मैं आप तक ये समझ में आया? अभी तक मैं इस स्लाइड आपको फिर से चीज कर रहा हूँ. Gaurav Singh, I'm telling you several times, I will remove you. Okay, I have to take action. Please do not make Gaurav Singh, do not disturb. I will remove you, Gaurav Singh. Okay, let us see. So students, अभी तक मुझे बताएं आपको समझ में आया या नहीं? जी सर. ओके, ये एक स्लाइड है जिसमें हमने सभी चीज कवर की हैं. नाइस्टेटिन, इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, किस डोजेज फॉर्म क्या है, सस्पेंशन और पेस्टल्स. पेस्टल्स क्या है, टैबलेट फॉर्म में ही होती है पेस्टल्स, बट ये टैबलेट नहीं होती, ये ओरल कैविटी के लिए यूज होती हैं. ऐसे स्ट्रेंथ इसकी 2 लाख यूनिट्स. नोशिया, वॉमिटिंग और डायरिया साइड इफेक्ट्स होंगे. क्लोट्रीमाजोल जो कि ओरल ट्रॉच के फॉर्म में, ट्रॉच भी एक ऐसे पेचेज ही होते हैं, ट्रॉच जैसे टैबलेट जैसे पेच जैसे होते हैं, ओरली यूज होते हैं. 10 मिलीग्राम ट्रोज. नोशिया, वोमिटिंग, लोकल डिस्कम्फर्ट, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया. एम्पोटेरिसिन बी, जिसके सस्पेंशन फॉर्म में हो सकता है, टैबलेट एंड लोजेंस फॉर्म में. इसके 1 मिलीग्राम पर ml, 100 मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम, ये इसका जो है डोज है. एंड इसकी टॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, हाइपोकेलेमिया, ये साइड इफेक्ट्स हैं. नेफ्रोटॉक्सिसिटी मतलब नेफ्रॉन्स में, किडनी में टॉक्सिसिटी, मतलब टॉक्सिसिटी और नोशिया, वॉमिटिंग, ये सब है. थ्रम्बोसाइटोपेनिया, दर्द होगा जब आप जो थ्रम्बोसाइटोपेनिया में, इसमें थ्रम्बोटिक में. एनीमिया भी हो सकता है, ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, एनीमिया. एंड म्यूकोनाजोल, जिसके लोकल डिस्कम्फर्ट साइड इफेक्ट्स हैं. सिस्टमिकली वही कीटोकोनाजोल, हेपेटोटॉक्सिसिटी, नोशिया, वोमिटिंग, साइड इफेक्ट हैं. टैबलेट और 200 मिलीग्राम में ये अवेलेबल है. फ्लूकोनाजोल. सो स्टूडेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट. आपको नाइस्टेटिन, एम्पोटेरिसिन बी, कीटोकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल, ये अगर इतना याद रख लेंगे, सो इट वुड बी गुड फॉर यू, सफिशिएंट फॉर यू. इसका टैबलेट किस फॉर्म में अवेलेबल होता है, क्या साइड इफेक्ट है, क्या इसका डोज है. सो दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. समझ में आया नहीं, मुझे बताएं एक बार. जी सर. गुड. सो दिस इज द साइड इफेक्ट्स बेसिकली दैट वी कैन से. फीवर जो है 98.6 से ऊपर होगा, फीवर, चिल्स, ठंड उसको लगेगी, ठीक है. किडनी फेलियर, उसका जो किडनी का पार्ट है वो काम नहीं करेगा. बीपी, जो हाइपोटेंशन में बीपी कम होगी, हाइपर में इंक्रीज होगी. एनीमिया में जो आपकी आरबीसी हैं वो डेथ हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, आरबीसी कम हो जाएंगी बॉडी में. स्टूडेंट्स, लास्टली दैट्स ऑल अबाउट फंजाई एंटीफंगल ड्रग. ये कुछ मार्केटेड फॉर्मुलेशंस हैं दैट आई एम टेलिंग यू, आई एम शोइंग यू हियर, कि किस किस फॉर्म में टैबलेट, वेजाइनल टैबलेट्स. नाइस्टेटिन जो है वो आपका एंटी म्यूकोटिक मीन्स म्यूकोलाइटिक्स फॉर्म में भी जो नाइस्टेटिन जो है, फंगल जो आपका थोरेड इन्फेक्शन है उसमें यूज होती हैं. एम्पोटेरिसिन फॉर इंजेक्शंस, मीन्स इंजेक्टर फॉर्म, जो लाइफलाइज है, आईवी इंजेक्शन में हम दे सकते हैं इसको. एम्पोटीन वीआईटी साइड इसका जो है. ऐसे ही आपका क्रीम्स हैं, नाइस्टेटिन एंड ट्रेमसिलोन का जो कॉम्बिनेशन में, टोरा करके, टारो,
ऐसे नाइस्टिन एंड टाइमसिन का अगेन टोराजोम आई हैव टू डिस्कस विथ यू। एम्फोटेरिसिन भी लिक्विड कॉम्प्लेक्स जो है आपका इंजेक्टेबल्स में ये इस तरीके से अवेलेबल है। ऐसे ही म्यूकोजेल्स, म्यूकोनाजोल्स, इट्रोकोनाजोल्स जो है वो म्यूकोजेल्स के नाम से प्रेजेंट है। म्यूकोनाजोल्स, म्यूकोजेल्स 15 मिलीग्राम्स म्यूकोजेल्स। क्लोट्रीमाजोल्स अगेन इट्स केनाजोल्स लोशन फॉर्म में, ल्यूपिन का है ये। क्लोट्रीमाजोल टॉपिकली केनाजोल सॉल्यूशन जो कि आपका ल्यूपिन का है, केनाजोल सॉल्यूशन के नाम से क्लोट्रीमाजोल्स टॉपिकल इन्फेक्शंस के लिए, फंगल इन्फेक्शन हो जाए तो। डेंड्रफ के लिए शैम्पूज में, डेंड्रफ में निजोरल जिसमें क्या है आपका आपका निजोरल में क्या है आपको नियोमाइसिन जो कि निजोरल फॉर्म में है यहाँ पे। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे डर्मल इन्फेक्शंस में ऐसे ही मिकोनाजोल जो है वो ओरल जील में है। क्लोट्रीमाजोल जो है वो क्या है क्रीम फॉर्म में है। ठीक है, तो ये इस तरीके से मार्केटेड फॉर्मुलेशंस हैं। नाउ फ्लूकोनाजोल इज इन टैबलेट फॉर्म, ग्लेनमार्क इज फ्लूकोनाजोल टैबलेट, ग्लेनमार्क का है। ऐसे ही अनदर इज स्टाडा का है आपका टर्बीफाइन इज इन क्रीम। ठीक है, इट्राकोनाजोल कैप्सूल्स दैट इज पेट्रोइड्स, from petroids you can say 100 milligram capsules itraconazole for systemic infections. And so these are the vaginal cream as well. Jejol cream is vaginal cream. Traconazoles is a class of azoles. Traconazoles, Pharmadrum is company. And this again some other you can say brand of antifungal drugs. Okay, greasepril wine, that is greasepril wine available in various types of syrup, you can say creams and capsules. Students, that's all. Thank you very much. Let me know मुझ anything you want to ask, कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं, anyone? हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोग अब इसको थोड़ा सा वीडियो मोड में रख सकते हैं। आई कैन टेक स्नैपशॉट फॉर योर अटेंडेंस का एक वीडियो शॉट में अगर आप दे दें। ओके, वेरी गुड। ओके, थैंक यू। नाउ यू कैन लीव। थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे पूछ सकते हैं। एनीवन यू हैव एनी डाउट, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? कुछ पूछना चाहें मुझे तो पूछ सकते हैं। एनीवन यू वांट टू आस्क, प्लीज आस्क मी। कुछ पूछना है स्टूडेंट्स, प्लीज यू कैन आस्क मी। कुछ नहीं समझ में आया आपको एंटीफंगल ड्रग्स? यस सर। वेरी गुड प्रियंका। मुकुल दागर, आपको समझ में आया? सर आ गया। आ गया, फंगल ड्रग अच्छे समझ में आ गई। गौरव सिंह, स्टूडेंट्स आप लोग नोट्स वगैरह आपको कैसे मिलते हैं? यू वांट नोट्स? आप लोगों को चाहिए? पीडीएफ अपलोड यस कर सर, देते हैं सर। यस सर, बाकी यस तो सर। Moodle पे। मूडल पे आपको पीडीएफ अपलोड कर दें? ठीक है, जी ऐसे ही करते हैं, यस बाकी सर। तो सब ठीक है। ओके ठीक है। तो आपको जो है मैं नोट्स जो है इसका मैं नूडल पे अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, अवेलेबल करवा दूंगा अपलोड करके। ठीक है, आपको ये जो आज जिसमें स्लाइड डिस्कस की एंटीफंगल ड्रग का इलेबोरेटिव वे में अच्छे से समझ में आया? कोई डाउट है, कोई चीज़ है, कुछ पूछना चाहते हो? और आज भी नेक्स्ट क्लास में फिर पूछना चाहते हो तो यू कैन आस्क मी। ठीक है, यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके सर। थैंक यू।